students, welcome back to my channel. Today I will teach you laboratory preparation of nitric acid or HNO3. Okay, nitric acid is prepared in the laboratory when niter or potassium nitrate is heated with the concentrated sulfuric acid or sodium nitrate or chili saltpeter is heated with the concentrated sulfuric acid. Okay, first potassium nitrate plus H2SO4 concentrated give rise to, suppose this is below 200 degrees Celsius, give rise to KHSO4 plus HNO3. So this is niter or potassium nitrate. Common name is the niter. You can also use sodium nitrate or chili saltpeter. सोडियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं. So we can also take temperature above 200 degrees Celsius. Suppose KNO3 plus H2SO4 concentrated temperature above 200 degrees. So in this case K2SO4 plus HNO3. So ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए. 2H ये 2K. Okay, SO4 H2. So temperature here is below 200 degrees Celsius. I have also given you the figure. Here temperature above 200 degrees Celsius. But intentionally in the laboratory the temperature is always taken below 200 degrees Celsius, because if the temperature will be above 200 degrees Celsius, then a hard crust of potassium sulfate is produced, which is stick inside the glass surface. ये क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट डेलिक्वेसेंट नेचर होते हैं. सो इट विल फ्यूज इनसाइड द ग्लास सरफेस, व्हिच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, इवन इट may break down the glass surface. Therefore the temperature should be taken below 200 degrees Celsius, so that instead of potassium sulfate, potassium hydrogen sulfate or potassium bisulfate is produced. Okay, also if the temperature is below 200 degrees Celsius, then wastage of fuel is also minimized. Okay, so ये part हो गया. Then we can say why concentrated HCl is not used instead of concentrated H2SO4 for the laboratory preparation of nitric acid. Concentrated HCl is not used because it is volatile in nature. Next, all the apparatus used in nitric acid, all parts of the apparatus should be made up of glass, not with cork or rubber, because nitric acid is highly corrosive in nature. So nitric acid vapor may corrode or destroy the cork or any cork or rubber. That's why all parts of the apparatus should be made up of only glass. Okay. Then next thing, you just see, after heating nitric acid vapor will come here. Then here chilled water, we will provide here chilled water. Then after condensation nitric acid is formed. Next question, pure nitric acid is colorless, but the nitric acid obtained in the laboratory is slightly yellow in color. The yellow color of the nitric acid due to decomposition of some parts of the nitric acid
into a reddish brown gas NO2। ये क्या होता है, जब नाइट्रिक एसिड को हीट करते तो HNO3 ये इन हीटिंग 2H2O H2O देता है प्लस 4NO2 प्लस O2, ये एक रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। एक्चुअली हम लोग का मकसद होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, लेकिन ये क्या होता है when it is in heating condition नाइट्रिक एसिड का कुछ पार्ट डिकम्पोज होके NO2 बा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता, कोई चीज रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, so due to the presence of such reddish brown colored gas, so nitric acid is imparted slightly, the color of the nitric acid is changed to slightly yellow। ओके, बल्कि प्योर नाइट्रिक एसिड का कलर होता है, कलर ये बिना कलर का होता है, कलरलेस होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड obtained in the laboratory will be slightly yellow in color। The yellow color is due to the presence of a reddish brown gas NO2 which is produced due to decomposition of some parts of the nitric acid। Okay, that yellow color can be removed, again वो कलरलेस और व्हाइट को आ जाएगा when carbon dioxide or dry air is bubbled over the acid, or when water is passed over the nitric acid, or when passing water over the nitric acid, or when dry air or carbon dioxide is passed over nitric acid। ओके, वो येलो कलर दूर हो जाएगा। सो टुडे आई कंप्लीटेड वन some small part of the entire chapter nitric acid, that is laboratory preparation of nitric acid। मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन का नाम तुम्हें सुनना है तो वहाँ कंसंट्रेटेड एसिड लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है। कोई भी टेस्ट प्रोग्राम में एसिड का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट नहीं लेते। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड जब आता है वहाँ भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट नहीं लेते। ओके, सो यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट portion, you must go through it and benefit it। Okay, wishing you all the best, I recommend। Thank you very much।